Good evening. Good evening. Such a wonderful child. He has come in search of the teacher. Good, good, good. क्या भाई good evening नहीं बोलेगा? Good evening. That's very bad. Huh? You should stand up and wish me all. Good evening. Very good. Come. जल्दी जल्दी आप लेट हो. लेट होने के बाद ये जल्दी. So SST first lecture और geography first lecture. दोनों एक ही बात. Let me see. Elena, sign Elena. So small introduction of the subject or me? Which one you want first? Subject. एक तो हमारा 9th standard का स्टूडेंट ही है. ये मेरा भी आता है my dear. सर वो लड़की थी ना गोश्री. हाँ वो लेवल में आ गई. बैठा है. And और किस होते हैं? राज प्रज्वलित. किधर गए? वो छोटे. सिर्फ आदित्य है. आ जाए नहीं. ठीक है. Now for time being, not time being, my name is this will be. Your timetable reflects this, correct? So I am the person handling this. Full length. बहुत जरूरी है यार. Short name से थोड़ी आप मुझे बुलाएं, है ना? You can call me as Aligesh. Not call me, that is my name. Okay? पहले sign कर लो. थोड़ा सा मेरे बारे में पूछना है, बताना है तो बोलो. ऐसा कोई बड़ा मैंने achievement किया नहीं है, but किया है. I've been working with English for a good time, mainly teaching these two subjects,
एंड क्वालिफिकेशंस बोलना जरूरी है नहीं चाहिए अरे कुछ तो नहीं ये बेचारा नहीं चाह रहा है वो चाह भी रहा है I've done my grad and post graduation in my wonderful subject called economics and I teach various levels of SST economics इतना ही थोड़ा सा इंडिया में भी काम किया है और एक 9 साल बाहर भी काम किया है but I'm back with UP बाहर जाने से पहले भी I was with UP इंडिया आने के बाद भी I'm with UP so what is UP in geography यूनियन टेरिटरी पर हम जिस यूटी का बात कर रहे हैं वो क्या है श्योर है ना चल लेट्स हैव अ स्मॉल recap no not recap sorry intro of yourself My name is Sanskriti. you should get up My name is Sanskriti. from I'm from STS. where is it here साधु वास्तव नहीं। अच्छा उसको ऐसे बोलते हैं हाँ, क्या? we call it- और भी तो बोल सकते हैं संस्कृति कुछ नहीं नाइन के पर नहीं बोलना है She doesn't want to. No, I forgot to use it. ये मार्क्स कितना मिला? Say 60 out of 80. Geography. Very good. बहुत कम। Diana. Diana. Yeah. Sony. Yeah. Oh, Sony चैनल से कुछ है? And which school are you? Gold. Goldcoast. Very good. Anshav. हर्ष चावला। Shava. Goldkrishna. अच्छा चावा वो जो अभी मूवी निकला वो वाला। नहीं उसमें डबल ए होता है तो इसमें सिंगल ए। So that's your surname, is it? Yeah, CHA भी है। And where are you from? तेलंगाना। Telangana. Oh my God, South is it? Hyderabad is far away from you. No, my native home is Hyderabad. Okay. So this year geography and last year geography, क्या difference है? Last year geography, you did not have any choices. All the chapters were compulsory till that natural regions of the world. है ना? अच्छा एक दो chapters इधर उधर कह रहेगा. But as far as our 10th ICSE geography is concerned, superb. 5 chapters. Not 5 chapters, 5 modules or 5 units. अभी एक यूनिट में 2 चैप्टर भी होता है, एक यूनिट में 4 चैप्टर भी होता है. Boy, what's your name? Before coming in, you should take my permission, huh? दिया क्या? जब मैं तुझे मैं अंदर कैसे बुलाऊं? बैठ जा. Next time I'm not he knows my all habits. So slowly बता देगा तुझे. मैं खड़ा है अंदर आने से पहले क्या पूछते हैं हम लोग? तो पूछा क्या? तो फिर मैंने अंदर क्यों अलाउ किया तुझे? Once I'm in, I will not allow. इनसे पूछ लो, ये लोग वॉशरूम भागते थे सब. एक बार मैं अंदर घुस गया तो then बेचारा वो वॉशरूम में चले जाता था. Then I'm not very strict, but at the same time for studies थोड़ा सा है ना? And don't worry about this year geography. Don't worry मतलब मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा, देना तो आपको ही है. But then I will make it as interesting as it could be. So as you should understand the paper pattern. How it comes, huh? Paper pattern. Let's touch that first. We have 2 sections, है ना? School में नहीं बताया ना कभी? Section बताया? And that is why you were saying that, huh? Section B. Section A will be of 30 marks, correct? Section A 40 marks. 80 marks का है ना? Sure? 50. Here, question 1. Generally, the topic which generally people say is, sir, if you डाला है ना? Any schools might have started with this. Started? तो वो completed also. तो मुझे जो भी doubts है आप बताइए. हिस्ट्री टीचर इन यूटी के साथ दो को टीचर ने नास Who is that? Okay, good yaar. Topo. like after this class only Okay, good yaar, good yaar. surely this is two in school. Very good then. Then I should ask from you guys only. I will not teach you. Next, we will have MCQs. Again, this is 10 marks. Again, this is 10 marks. And finally, 30 marks का 30 है. तो ये क्या रहेगा? Maps of India. And as far as your 9th standard maps, if you remember, correct? It was not possible. world geography था. वो क्या Mediterranean region इनको पूछो मैंने कितने सारे वीडियोस देखा है ना? कितने वीडियोस देखा है?
हाँ पूरा रीजन को मैंने इनको इतना सिंपल में पढ़ाया दे टेलिंग सर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है माना वो कौन सा रीजन था पीएनजी तुझे अभी भी याद है there's a place not a place it's a country anybody have heard it so I call it Papua New Guinea PNG so that also I had showed the videos and everything so don't worry this year also I'll make use of these videos but at the same time hey इसके बारे में तो कुछ नहीं please tell yourself all that and that you should not get up on it फिर भी कुछ लगाए कि चेक करेंगे 5 रुपए वाला या 10 वाला लगा क्या You did not understand. हाँ ठीक है. You are from Bodha and Bharat. Bharat पूरा नाम क्या है? Mahesh And Bharat को कितना मार्क्स मिला मैंने तुम्हें? 9 तो मैं खाली हो किधर था? अरे बट मार्क्स तो मालूम पड़ जाता ना. चलो ठीक है. रहने. नेक्स्ट टाइम बता. हाँ? मतलब तो होम टाउन बात कर रहा है. आदमी कहता है अच्छा चल ठीक है. चलो. क्या था? कुछ शादी हुई थी? फंक्शन? आज हमारा एक कलीग का वो कॉलेज में उसका ब्रदर का शादी है आफ्टर कलीग इज गॉन बाय बाइक हाफ हैव गॉन बाय कार और मुझे फोन किया सर आप आ रहे हैं मतलब लेक्चर होने के बाद पता चला अहमदाबाद में थे सर आ जाओ सर 3 घंटे में मगर आपको 12 बजे पहुंचे आई एम गोइंग so this is the pattern you have to be very careful 30 marks now let us understand what your friend was saying we are close to 8 units 1 2 अभी मैं यूनिट्स भी आपको बता दूंगा in second and third lecture out of which each unit will carry 10 marks so for 50 marks how many units have to select only 5 है ना so this pattern was then 9th also हाँ 9th also but 10th में थोड़ा सा ये तरह स्ट्रिक्ट जाएगा क्योंकि टोपो है ना उसमें so what we are planning to tell you पूरा 8 का 8 मॉड्यूल पढ़ने का जरूरत नहीं जैसा अभी the chapter which I will be starting is called climate that is one module certain days there will be only 4 chapters one module भरत को समझ में आ रहा है what I am saying क्या बोला मैंने 4 चैप्टर होंगे you don't speak in English or what my Hindi and Marathi are very bad he asked me he need also there will be 5 chapters where section B where you said there na where shall I go your hometown hey where is your hometown brother अकोला किधर पड़ता है वो कौन कर रहा है ईस्ट महाराष्ट्र अरे अकोला महाराष्ट्र में है तो क्या which district है oranges so every unit you will have to select the last unit is generally people do not select because it is related to that science है ना कौन सा unit anybody knows वो natural not natural waste and waste management but every year I ask my students अरे क्या आज परमिशन अंदर यार ऐसा देख रहा किसी की पहली बार he is the person not the fellow हाँ मतलब today also you are late फिर से आ रहे हो बैक टू बैक से वो साइकिल का थोड़ा नहीं पहले बैठ वो अकोला से आया है और 3 से 15 मिनट पहले है ना बरत तो 15 मिनट पहले आया ना आप उसको जोड़ा था 10 मिनट इतना भी हरिश्चंद्र मत बन ये सब वेरी शार्प फेलो बर्थडे के एक बार लास्ट है ना चलो ये आगे क्या है so this is how we will be studying geography absolutely clear तो पहले ये कॉपी कर लो लास्ट पेज में वो ऐसे तो फर्स्ट पेज में चलेगा हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है कितना रेस्ट करना है और कितना सोना है वो भी जरूरी है यू डोंट नो दैट आई एम टीचिंग 10 वो तो किसने खुश होगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूं टाइम पे आ और ज्यादा खुश हूं वरना बाहर ही खुशी होगी अंदर मत so we will be starting the first chapter पहले ये कॉपी कर लो then I'll explain chapter number actually this is 3 or 4 languages hey your friend was in Godri always mentioning कि कुछ cricket बात की है मैंने हाँ बोल दो मैं like next week क्या कुछ नहीं तू लेट आए नहीं सर कौन से फोटो लेट आने वाले को तो मैं मूवी बोलने नहीं अरे सर बड़ा दिक्कत हो गया वो साइकिल आई अंडरस्टैंड तेरा दिक्कत 2 साल से देखे
दिक्कत what is that word दिक्कत प्रॉब्लम तू लाइक सर बताओ ना सही है ना वो भी करने दूंगा मैसेज जाएगा घर पे और बोलेगा आपका लड़का तो आया ही नहीं इधर ये मिस्टर दिक्कत निकाल बुक और जल्दी लिख ये यार उसको बस बताना मैंने क्या बोला तू समझ गया ना फोन पे ही शुड नॉट बी देयर जहां हम लोग जा रहे नहीं सर मेरे को भी नहीं क्रिकेट क्लास में यार क्रिकेट के क्लास में बोला एक्स्ट्रा क्लास लगा ना मेरा उंगा बेटे से हां मत बता ये लतीफ ये कौन है अभी अभिप्राय अभिप्राय anybody knows him or her him वो अकेला ऑप्शन है which school is it from बोला your own school I'm always I'm not Godrej Godrej में कब स्कूल खोल रहे हैं So any queries or any doubts please avoid using Hindi in my lectures because my Hindi is one of the not the best so I want my students to speak am I correct Mr. Master Bharat yes Akola bhai Mr. Bharat चल अच्छे तो बात करते यार वो क्या है फाइन करने से बचने का ना सर वो वीडियो याद है तो you have come late you are not allowed to speak I'll come and tell you now shall we so to maintain a separate notebook bring your volume as well as textbook and every time the students come and quarrel with us मेरा स्कूल ये टेक्स्ट यूज कर रहा है no problem of that any text we will be going as per the syllabus given by ICSE board morning star use करो या evening sun use करो मुझे कोई इशू नहीं you can bring your books that also I can solve okay चल now the first thing that I'll be explaining if not 9 I think ये 9 वाला मुंह बंद रखेगा है ना हाँ सर हाँ मुंह बंद रख बताओ क्या है वैसे इसको वो भी नहीं मानते सर मैं तो मैंने हाँ बात कर दिया what is geography like this anybody geo means subject है ना graphy is also subject and what does it mean come on geo means the earth and नीचे क्या है फिर ग्राफी मींस द मैप और है yeah हाँ study of the earth एक्चुअली मुझे ना ये वर्ड से थोड़ा सा एलर्जी है स्टडी ऑफ द अर्थ कितने साल से हम पढ़ रहे हैं अभी तक खत्म नहीं हो गया है ना सर बचपन से आ रहा है ज्योग्राफी सर हम लोग गर्ल में क्या करते वो वर्ड डालना पड़ता है ना एडवर्ब है द अर्थ क्या हो मतलब one you remember your first chapter of your 9th standard what was it shape and size of the earth second chapter was grids and latitudes and longitude then रोटेशन एंड rotation and revolution भाई साहब को याद है very good boy इसका मतलब क्या है you and me should understand my home first where are we living हाँ और अर्थ के बारे में नहीं जाना तो फिर किसके बारे में बोलेगा तो मुझे आप लोग की तरह डाउट आता था are we living inside the earth or outside the earth on the surface sure surface of the earth तो on the earth मतलब फिर रोटेट होता तो मैं गिरता क्यों नहीं शायद मैं भी अर्थ के साथ रोटेट हो जाता हूं क्या नहीं कोई कुछ नहीं होता इनफैक्ट अर्थ से रोटेट वेरी फास्ट इनफैक्ट उसका जो ट्रॉपिक्स कैंसर से कैप्रिकॉर्न इट इज 632 किलोमीटर पर आवर स्पीड में घूमता है रोटेट हां बिकॉज़ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज देयर whatever you study about the earth till now can anyone say I know everything about the earth no वो तो कहीं के बाद everything can nothing है nothing things will happen और इनफैक्ट एग्जाम के बाद ही बच्चों को उस चैप्टर के बारे में नहीं पूछते सर आई नो फैमिली रिसेंट अबाउट what tell me something new which I do not know then सर put your hands on what you like a girl is it हाँ सर हाउ कैन आई टेल यू समथिंग क्यों यार there are many things that you might do in there जो मुझे not सर लेकिन आपको सर ज्योग्राफी very simple देखो अर्थ
We always believe it was. Oh, उसको मैं बाद में handle करूँगा. One, we have atmosphere. You accept? है क्या? क्या है atmosphere? Bracket of air, sir. क्या? Bracket of air. उधर भी नहीं दिया आपने. Then we have hydrosphere, water. Then we have lithosphere, land, truss. ये तीनों को मिला के एक इंटरफेस बनता है जिसका नाम है बायोस्फीयर. हाँ सर ये तीनों पढ़ा है. ठीक है अगर आप बोलते तो मैं मान लेता हूँ. मेरे घर में फ्लैट है, फर्नीचर्स है, एसी है, मुझे बस इतना ही पता. Then why are you talking about the earth? My home is my house. No sir, where is my house? Tower पे है sir. Where is that tower? Sector 15, 16 जो भी अपने एरिया में. Where is that sun? Where? बस कितना where पूछेगा. आप पहले कहाँ खड़ा है? अर्थ में, मतलब यूपी में नहीं है. यूपी के चांद में थोड़ी है. हाँ बोल सकते हैं. I live in a building which is called the moon. है ना? So we always believe without the study of the earth, which is incomplete. Geography is incomplete. And let me quickly pull you back to my chapter. Where is that? And let us understand the word climate. But before I tell you the meaning of the word climate, the first question itself they'll ask by putting one more word together. What is that word? Anybody? Is these two words same? Different? Sure. If I say both are same, then you have to prove me wrong. क्या difference है climate और weather prediction में? तू बोल. Sir, weather. This is standard basic sense. Sir, weather almost no change होता है, but climate. Because वो तो क्या तेरा चैनल है क्या कुछ चीज? नहीं sir, देखो. I don't see you. Sit down. Wait, I'll ask. Climate is something that is constant, whether it changes. Constant. मतलब like if it's summer, then it's summer for like another. So sum is the word I should take. Good. इन्होंने भी याद किया. इसलिए. Climate changes by month. It changes monthly. Climate. Yes. ठीक है. Wait. Let us say. Climate changes. Okay. monthly. And weather changes. Wrong है ना? ये क्या monthly changes, weekly changes? Same. I say very simple. हाँ, लिखो. मैं बोलता हूँ. Climate we observe for a minimum period of this many years. Correct? आप बोले तो इतना तो मेरा डैड का भी मन नहीं किया है. डैडी इतना है नहीं पहले थे. मैं थोड़ी अपना मम्मी पापा का नाम. और मेरा मैं तो अभी जस्ट 13 10 14 चलो ठीक है 15. So if I want to say Indian climate is referred as like this, I have to give the answer and explanation also. I will explain. Tropical monsoonal climate. Do you accept this word? Don't accept. Sir, announce it. You accept. अच्छा वो ऐसा confusion. अरे ये Indian climate को ऐसे ही बोलते हैं. वो तुरंत एक लड़के ने बोला चलो गीता पर कसम खाओगे क्या है? मतलब गीता किधर है? कल लाता हूँ. इसमें क्या चलती है? Nobody knows that we call it climate. It's very sweet. अरे Indian climate. अच्छा करेक्ट है ना? यही मेरा गीता है. इसके ऊपर कसम. Why do we call it as climate? Like this, I will explain later. Now I say weather of Maharashtra. Correct? It is hot and humid. Here, what did I say? Climate of India. अब बोलो difference. देखना भी आप लोग का दिमाग का पता कितना चलता है. हाँ. सर मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ. ये भी तो एग्जांपल ही है. तो हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया बोलते हैं. मतलब we take the average of all the climates in all the states and we मतलब average वाला like sum it up. Mathematical formula. We sum it up. Like अगर all the regions like averagely hot होते तो वो लोग कश्मीर तो कोल्ड होता है. लेकिन अदर 27 हिमाचल प्रदेश भी कोल्ड ही होता है. लेकिन अदर लद्दाख बहुत ज्यादा कोल्ड होता है. लेकिन मेजॉरिटी तो साल में तो -40 एवरेज है.
लेकिन अभी और भी बोल सकते हैं major तो चलो very good that means he is able to fight with people good I like it generally we say India is located in the tropics Tropic of Cancer passes through center of India but हमारा बच्चा लिखता है Tropic of Cancer divides the country into two parts मतलब डिवाइड क्यों लिखा है हाँ डिवाइड तो कर रहा है नॉर्थ इंडियन अलग साउथ इंडियन मेरा बच्चा ऑलरेडी इंडियंस को ब्रिटिश में पढ़ गया वो मुझे मालूम नहीं लिखा तो लिखा ना ना ऐसा भी लिख सकते हैं पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया क्यों मार्क्स मिलेगा चलो दो आप देन आई से monsoon arrival and departure use the word arrival departure ये वर्ड हम जनरली कहां सुनते हैं एयरपोर्ट ट्रेन कहां से arrival departure है ना होता है वैसे उनके ट्रैक में आता है so when we use this word always I will be giving this answer it is the arrival and which word departure of monsoon correct है what is monsoon by the way rainy sure na Bharat what is monsoon by the way rainy weather rainy weather rainy करके word नहीं क्यों ऐसा है अच्छा तो बोलो control that it is the arrival and departure of monsoon which determines मतलब बाकी तीन क्लाइमेट को ये डिटरमाइन करते हैं एक्चुअली अपने पास 3+1 है और 1+3 है कितना क्लाइमेट है 4 सीजन्स है इंडिया तो किसका अराइवल डिपार्चर डिस्टर्ब करता है monsoon that is why we use the word which word monsoon how many years we have observed 30 to 35 you have the patience of observing आप एक घंटे की बात नहीं दिख रहा मैं खुद ही बात कर रहा हूं अब 35 years का तो बहुत बेसिकली and who observed this weather forecast weather forecast वो तो वर्ड है यार who is now कौन है सब जो भी है छोड़ो we have a department in our country called Met department what this yes sir oh what is it in Mumbai we have two places one place I don't know second place I forgot sir it is I think the first place is in Sangli के बाजू में किसके बाजू में Sangli के बाजू में कुछ भी मत बोलिए one place is called Santa Cruz and other place is Kolkata both the places in Mumbai they give this weather forecast आप newspaper पढ़ो वो ही तो नहीं पढ़ता हूँ और मैं सुनो very boring है पूरा इंडिया का नहीं मुंबई का महाराष्ट्र का जनरली पूरा इंडिया का देते हैं बट मुंबई में ये दोनों सेंटर है जो हमारा मेट मेट का मेट मुंबई इकोलॉजिकल नहीं इट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये लगाने गया तो उसको तो पता था इसके बारे में नहीं वो तो एटलीस्ट पूछ रहा है तू क्या कर रहा है दिस इज द वर्ड माइक मैं तो सुन रहा हूं हां मैंने देखा है आज कैसे देख रहे थे सुन ही रहे ना अभी से यू आर माय टेंस करना मैं नहीं था तू वैसे भी एब्सेंट नहीं इसको यार तू तो अभी फ्रेश चेहरा लेके मैंने सुना इसको बोल रहे नहीं पर तू इधर आ जा यार और तू इधर आ जा बेचारा तेरे में से ईमानदार भरत और वो बेचारा पीछे जो बैठा है understood so what is these two stations doing they will observe the daily weather forecast where it is that's right and they will might have observed the climate of India for continuously for this many years that is why they have come up to the conclusion that India's climate is which climate tropical monsoonal climate is it okay and the second point of difference who can tell me sir they determine the entire India so definitely why not sir but why is the headquarters only in Mumbai if they determine that because of the financial capital Hollywood Bollywood क्या Hollywood बोलूँगा बाकी चीजों में भी है कैपिटल बाद में बात करते हैं शाहरुख खान के लड़के से पूछना पड़ेगा तुम क्यों हंस रहे हां भाई तो किससे हाँ वाचन क्या है सुधर गया है चलो what is the second point of difference sir किसकी this is generally for a larger geographical area what does larger means
I'm studying about entire India, correct? Or larger, and this is mainly for a smaller geographical area. Do you accept this? Yes. So now इसका example दो. हाँ तो बोलना है. So मैं say I say climate of Mumbai. बोलेगा तो फिर चलो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट. Weather of India, वो भी डिस्ट्रिक्ट. Weather of Mumbai and climate of India. correct? Sir, but it sounds right, like while saying. Because you are Mr. Wrong. Third point of difference. Come on. This is more or less permanent in nature, है ना? Yes. Yeah. And Because we have observed for so many years. Here daily changes happens. It's like you and me. कल तक मैं कैसा था और आज कैसा बनेगा और कल कैसा बनेगा वो मेरा मूड के ऊपर है. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है वो कैसा रहता है? वो we will study under weather. जबकि इसमें भी चेंजेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है. अभी जोग्राफर्स लोग किसी को भी पूछो क्या प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो जाके एसी जाके बैठना. लिसन, पूरा ग्लोब वार्म हो रहा है, तो तुझे क्या करना है घर पे बैठ. सर एसी ठीक है सर, बट आइस कैप्स आर मेल्टिंग, तो पानी बढ़ रहा है ना. मराठी में बोलते हैं पानी वाचवा. इधर पानी पिघल रहा है तुम sir, glaciers. ग्लेशियर्स. एंड हिमालय का तो किसी ने बोला 75% मेल्ट. अरे यार मैं पिकनिक जाने वाला था ना, ये मेल्ट हो गया पानी देखने के लिए मैं उधर क्यों जाता. बस एक 2 महीना रुका. फ्रेश महाराष्ट्र में इतना बारिश होता है, हमारा गटर भर के बाहर आता है. हमारे गरीब बच्चे स्विमिंग पूल के लिए अंदर ही घुस जाते हैं, बाहर नहीं आते. तो बेटा बाहर नहीं रहो, स्विमिंग पूल है मालूम पड़ा अंदर से और 2-3 दिन बाहर है. मैं पिछला बारिश में गया आज. So we always believe that India is known for its weather change. Is the climate of India changing? No, more or less the same. और क्या differences हो सकता है? Sir, तो मैंने सही बोला था ना. हाँ तू जो भी बोलेगा सही है. अरे सर बोल रहे क्योंकि गीता तो मैंने तेरे हाथ में दी है. मतलब कसम खाने. Sir, actually बोल रहे ना. हाँ you are right. Average होता है ना. Why do you want to testify? Don't relax. Even I am also sometimes only wrong. नहीं सर. चलो जान दो. Put the question in your note. Distinguish between. अभी तो wrong है. जल्दी से बैठेगा. एक काम कर. Go and take some. ये पहले दे दे. Take some supplements. So that you can directly pick up paste in. है ना? Don't have to do. Distinguish between weather. ये क्या है ना? अच्छा बेस्ट फ्रेंड क्या क्लास में? Between climate and weather. Distinguish between. इन्हीं स्पेलिंग वर्ड को नहीं मालूम है वैसे पूछना, ठीक है? उससे मत पूछो. पूरा साल भर का नोट्स निकल गया. सर मैं 4 महीने लेटर करा था. Okay. You are my star of my class. But also star मत पूछ. इतना अच्छा सर. Where is the supplement? She's very. सर आपने बोला ही नहीं. क्या? आपका टीम फेवरेट क्या टीम? देखते हैं तो बताएगा. I like those team जो दोनों मैच खत्म होने के बाद आता है. Commentators. Supplement book नहीं लाया क्या? इसको नेक्स्ट टाइम से एक सप्लीमेंट कर सकते. सर मैंने आपको देखा था एक दो वीक पहले साइट पे. मैंने तो आज ये आपने सर मैं क्या चलाता हूँ इसमें फ्यूल डाल के तो Sir, exam अच्छा लिखते हैं हम लोग. मैं देखा तो फिर हाई एंड करने का ना हाई मेरा बहुत जल्दी में था. वो वेट कर मतलब लेक्चर के लिए जा. किसका ही था मतलब उस टाइम. ठीक है मैं बात करता हूँ. या ऐसा देगा पूरा लेक्चर ही निकल जाए. चलो डिस्टिंग्विश लिखा. Have you made 2 sides or shall I give it in paragraph? What do you want? Paragraph में दे. चलो फिर पहला लिखो climate. अभी से हम only serious बातें करेंगे. And भाई साहब नोटबुक लेकर आओ. इधर रखा है नोटबुक. Sir, वो कुछ stage time सब होता है. मतलब करेगा ही नहीं. चलो अच्छा स्वीट बॉय एंड बोलता है कि मैं जो भी बोलता हूँ सही है सर. मेरा भी बहुत सारा है. शॉप में ही है. पैसे नहीं देगा क्या? सबका बुक भी था. हाँ है ना.
ऐसा आपको मैं डाल दिया. It has gone to London for publications. हो गया है. And Sir, doesn't when can we buy? Publications के लिए थोड़ा time है because they have asked me to circulate it in their right now. So Climate. What is the book based on? What is it? What is the book based on? I'll show you the blueprint. मेरे पास है मैंने दिखा. Climate. बोलेंगे क्या बोला मैंने? Is purely based on what is it based on? Study of changes in atmosphere over a long period of time. Changes in atmosphere over a long period of time. So how many years you have to write inside the bracket? 30 to 35. And what is the other one you have to add? I was going to say, hey, what is the other word? I forget his name. Hey, say that now. Last time we did Aditya, tell me, after 35 years, what will you write? Continuously. Likho. Second point. It studies larger geographical area. It studies larger geographical area. Underline that word, larger. Example होता देखे या last में लिखे? Last में लिखते हैं because उसके बाद एक connected questions भी. Now third point. Changes in atmospheric conditions are minimum. Changes in atmospheric conditions are minimum dash permanent nature. Generally climate एक permanent nature है. ठीक है और आगे नेक्स्ट पॉइंट हाँ नहीं क्लाइमेट टाइप बोला है ना एग्जाम्पल लिखो इंडियन क्लाइमेट is best referred as AS. Put open inverted comma, put this entire few words into quotes. Tropical monsoonal climate. Tropical monsoonal climate. So can I write Africa? Tropical monsoonal climate. Africa में इंडिया जैसा बारिश नहीं होता है. Maybe sir, can I write African climate is? समय तेरा उधर कौन है? लिख तो है माय गॉड मेरा तो डैड ने बोला लंदन में है मेरे को मतलब मम्मी उधर की सब मेरे दोस्त का भाई है सच्ची हाँ सर African है. नहीं अब जाना है उसको थोड़ा बोल इधर है मोजाम्बिक पेरू टंजानिया ईस्ट अफ्रीका अभी इधर आ गया सब जाने वालों की अभी इधर आपका स्कूल है क्यों है मैंने उसको उसका नाम अब्दुल है. उसका अरे इट्स ओके फ्रेंड उसका है ना नहीं मेरे दोस्त का भाई अच्छा छोड़िए लेट्स कम टू टॉपिक तो कंफ्यूज है तेरा दोस्त और भी कंफ्यूज लेट अस गो टू वेदर ना वेदर ए केयरफुल विद द स्पेलिंग डब्ल्यू एच मत लिख देना दैट विल बी डिफरेंट वेदर वो कौन सी है? वो इंग्लिश वाला वेदर ये क्लाइमेट वाला वेदर वो इंग्लिश इज टू वेल अभी बोल रहे अफ्रीकन है they don't speak English at all. Have you heard about a country called Somalia, everyone? Yeah. What is the specialty?
pirates. Somalian pirates. जो उधर किसी ने बोला खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है, ह्यूमन बॉडीज आर उसके एक्सरे, and many Hollywood actors and actors go there to donate money. Very poor. But then Africa is known for its rich wealth. You know that? Huh? Richest diamond deposit Africa में ही है. And wildlife जितना भी है दुनिया में, उसका 40% तो सिर्फ अफ्रीका ही है. सर फिर ये लोग इतना गरीब क्यों है? उधर ये थोड़े लोग उधर भी रहते हैं. I think आपको पॉलिटिक्स में ना वो चैप्टर अभी आएगा शायद पॉलिटिकल साइंस. Sri-Lanka and majoritarianism and authoritarianism. When India got independence, we made the British to run out of India. गांधी जी ने अपना चढ़ी हुई दिखाया कभी surrender की बात है, ऐसा कुछ हुआ है. Whereas in South Africa, they made the white people to stay in their country. फिर उन्होंने freedom लिया. आप अभी South African team देखते हैं, how many, sorry, black नहीं, how many non-white players are there? Very few ना. majority तो white ही है. इतने क्या white? मतलब अभी थोड़ा सा white बोले थे गलत थी लेकिन black तो नहीं है. Because I live in a country where if I say like that, I will be gone 6 months inside the jail. सब dark बोलो. dark क्यों बोलूँ? यार तुझे ऐसे क्यों डाल? वो क्या चॉकलेट है क्या? डार्क चॉकलेट. सर सच में white chocolate. हाँ अभी आ गया. चलो लिखो weather. First point. Now we have to compare ना. First point हमने उधर क्या लिखा? Purely based on study. हाँ. Longer period. Longer period. Weather continue करो. Is determined by short or seasonal changes. Why? Short SHORT or seasonal changes of the atmosphere. That is shorter. Shorter duration of time. Second point. Frequent. Second point. Frequent changes in atmospheric conditions. Frequent changes in atmospheric conditions. Next. It undertakes. Next. A smaller geographical area. Sorry. It undertakes the study of smaller geographical area. ठीक है ना? Study करना होगा. Smaller geographical area. Then the last point. Weather of Maharashtra, Karnataka. Sir, is it state-wise or It can be place wise also. Maharashtra के अंदर भी तो अलग-अलग weather है. Weather of Maharashtra, Karnataka, etc. Now I will be discussing. First, write the question because it is very important. Shall we? Questions लिखते हैं, हाँ? Why Indian monsoon or Indian climate? Sorry, Indian climate. हाँ, ये कौन बोलेगा question? उधर है ना बोर्ड में. Is known as tropical monsoonal climate. That is have a lecture not by me, not by you. है ना? ये answers आप लोग से. Indian climate is known as tropical monsoonal climate. Okay. Now you guys can be a master, है ना? I will accept all your points. क्या देते हैं? अरे बोल एक तो point बोल नहीं सकते हैं. Sir, I give the last one. I understand. हाँ.
Sir, Indian climate. Question नहीं आता। Indian climate is known as tropical monsoonal climate because as the Met department has studied for 30 to 35 years. तो क्या होगा? ये पढ़ाई करने से नहीं sir, it is Topic of cancer, very good. देखो मैंने बोर्ड में लिखा है ऊपर एरो मार्क डाल के क्या लिखा है? भरत, very good boy, बोलो। हाँ, she was saying. Continuous arrival and departure of changes of तो होने देना क्या कर? वैसे भी आप भी arrival होता departure होता। It influences. Do you like this word called influencer? Anybody is there in your life who is influencing your life? पहले तो parents नहीं है ना मतलब influencer the parents नहीं सर पापा तो बहुत strict है मम्मी उनसे भी strict teachers आजकल किधर है if it was the students हाँ ये हो सकता है मेरे friends देखो the math teacher who is putting his or her head on the table and explaining बच्चे को समझ में नहीं आता और उसका friend है वो The teacher is explaining trigonometry, identities, expansion, sine, theta, cos. And it's like you are entering into a theater and watching a movie in a very bad mood. Movie is very good. Movie is other way. सब सोता है उस मूवी में तो आप एकदम फ्रेंड्स के साथ मजा मस्ती अरे चल यार मूवी मतलब मूवी कैसे बहुत अच्छा सर मूवी किधर दिख रहा था हमारा तो मस्ती चल रहा है ना सो इट इज योर थिंकिंग हाँ सर आपके लेक्चर में हमारी बहुत सोचा बट आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं मतलब पढ़ा वी आर आल्सो ट्राइंग टू लर्न है ना भरत सडनली भरत को मैंने फिर शॉक किया क्यों अंदर आया नहीं सर रात हो गया फिर क्यों बाहर जाएगा So we always believe that it is so simple to tell you that monsoon का influence stock market के ऊपर भी है। Shocking है? हाँ सर वो ज़्यादा rainfall होता है stock market बंद होता है। हमारा स्कूल भी बंद होता है। No, the share prices moves. Rainfall के ऊपर shares ये पहली बार सुना। सर लेकिन कैसे? वही तो मैं बताऊंगा ना सबको जब तू बताती तो मैं क्या करूँ? In India or in our Indian stock market, you know everyone's stock market, na? Whatever geography में economics की बात. We have a company which is called as FMCG. चलो. Everyone, you heard it. चलो जल्दी. नहीं पता मुझे भी नहीं पता. मैं भी ऐसे कैसे करता. Food, medicines, consumer good industries. सब कुछ तो आ गया. कोई इंडस्ट्री मैंने छोड़ा. सर इंडिया में फूड इंडस्ट्री सबसे बड़ा है. क्यों पब्लिक में देखो शाम को पूरा गली में भरा रहता है या पहले पानी पूरी खाए फिर बोलेगा चाइनीज फिर डोमिनोज वो भी खा ले अरे फिर वो जूस वो भी पी ले मैं बोला मोज भी पी ले फिर बोला डिनर घर में बिरयानी बनाया है सर वो भी खाऊंगा मैं लेके सर डाइटिंग पे एक एग्जांपल मैंने किधर बोला So whenever we are talking about monsoon, we have to discuss 4 seasons of India. How many seasons? चलो, कौन बताएगा? Without looking into the volume or just a guess. Rainy winter. Wow. Sir, Very good. कौन बोलता था? Season, summer season, winter season, autumn season, spring. Autumn और spring में क्या difference है? Sir, autumn में पत्ते ओके यस तू तो आदित्य से आगे निकला आदित्य क्या है सर हाँ समर विंटर रेनी सीजन नहीं है मानसून विंटर समर ऑटम 10th आईसीएसई का ऐसा बकवास ठीक है मैं ये आंसर सुन के सर समर विंटर मॉनसून हो गया भाई ओके लेट अस पुट द फर्स्ट सीजन लाइक दिस या अभी तक किसी ने बोला है क्या रेनी सीजन और मानसून सीजन रेनी सीजन नहीं आता है ओके एंड हियर यू हैव टू टेल मी द मंथ आल्सो सच बोला अभी तक तो इतना लंबा सीजन मैंने सुना नहीं सर बेटर दे देखी तो हां बता हां कम ऑन एनीबॉडी
June से लेकर September. Very good, yeah. See, इतना brilliant. Do good, do good. Because I have taught him already. Whenever I answer wrong, also that day he was absent. Sir, promoted work. Second season, come on. Season of very good. Retreating monsoon. तो इसीलिए ज्योग्राफी बुक को कभी कभी ओपन करने का जल्दी से Sir, alright. हाँ ये कौन सा मंथ है कम आने बड़ी Sir, October to November. I am not talking very brilliant चल next Sir, तो रुक जाएगा कम आने बड़ी winter only so you say cool and dry winter very good he was my student December to February. Then the last season, come on, it's very easy. Summer. हमें कैसे Hot बोलते and humid. Hot and dry. Hot and humid. Sir, what's हैं? your Okay. value? Humidity है, hot and dry, summer season. चलो March I to want March. one volunteer who will come forward to explain me कि how रुका इधर आएगा तो मैं निकल जाएगा March to May. Sir, question में बोल through decide. Decide नहीं करते इधर आने के बाद मैं decide करूँ. Sir, First of all, I have listed you all the 4 seasons. Everyone have understood. मैं ये पूरा season को explain भी करूँगा. Now let me put what is it? so what's the इधर गया question? where is that? इधर है. Why it is called as tropical? मैंने बोल दिया, correct? Tropical बोल दिया. India is located in the tropic of Cancer. Monsoon. Let us understand why it is monsoon season. Generally यही time period है. But let us assume कि this time it is coming in the month of July. चलो July भी mostly आगे तक है. Let us put June, July, August, है ना? तो ये कैसे जाएगा? नवंबर. समझ में आ रहा है? ये सीजन आगे गया ना? क्योंकि हमारा मानसून क्या हो गया? बहुत लेट स्टार्ट हुआ. और ये नवंबर इधर चले गया. Then this will become December to Jan. Correct? And this will become Jan to 2 महीने आगे जाना है. April. April चल जाएगा ना? And ये क्या हो जाएगा? May. इधर अगस्त है. It will go up to June. Sir, this ये नहीं ये adjustment है. this is because of global warming because number of Why this has happened? Because my monsoon has arrived late. If I say no sir, ये जून में ही start हुआ sir हमारा monsoon. Is it going to influence the other season? No. So how many years our geographers might have observed this change? 35. That is why they have given the name as tropical monsoonal climate. Clear है? चलो let us write the answer. We have good time to finish this answer also. So दिन में at least 2 आंसर कंप्लीट कर दो, है ना? Right. Indian climate. Enjoys a greater influence. Indian climate enjoys a greater or bigger, whichever you like. Good, huh? A bigger influence of इसका है a tropical monsoon climate. monsoons, especially. If I'm going a little bit faster in dictation, guys tell me, yeah? Over here. Yes. Tell me. I'm going fast. What else? है ना? मेरे पास नहीं है. तो बात जाए. Right. What did I say? Monsoon especially. Especially its arrival and its departure. Careful है ना spelling के साथ. Especially its arrival and its departure. Second bullet point. Every season, the SW, what does SW stands for? Southwest.
वेरी गुड आदित्य जियो मेरे लाल सर द प्रूफ ऑफ हेयर ये तू भी है सर तो क्या होगा यार हमारा पिछला जन्म का रिश्ता उसके ना तुझे जब से आया ना देखा हाँ अफ्रीका में तो नहीं गए हम सर मैं कभी नहीं गया अफ्रीका में सर लगता है कि हो सकता है ना he can be my forefather also कब actually very Krishna हमारे पिछला देखो let me clear it very simple those I have taught or not at all are my students okay तो अभी से मैं आदित्य मेरे लास्ट ईयर का स्टूडेंट है बोलना भूल जाऊं नहीं only for you वैसे भी तो वो भूलने के लायक नहीं चलो you are all my student हाँ चलो अभी ऐसा लग रहा है 1 घंटे से आप मुझे जानते हैं देखो हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं ना अकोला ट्रेन में या कहीं जाते हैं तो जनरली एक छोटा सा आउटसाइड द सिलेबस है पहले लगेज रखने के लिए अंदर पूछते हैं क्या है मेरे सीट है अच्छा फिर स्टार्ट हो वो क्या है अरे लगेज रखने रुको थोड़ी देर ऐसे बैठे कहां जा रहे हैं अरे चाय वाला चाय अरे चाय पिए फिर आप कहां तक जा रहे हैं तो ये ट्रेन कहां तक जा रहा है ट्रेन जाना नहीं है रुका है अरे अब स्टार्ट हो गया फिर आपकी शादी हो गई क्यों नहीं हो पाया आपका हो गया हाँ 2 बार तो ऑनर से रह गया लेकिन तीसरे बार चल फिर बच्चे मतलब नहीं है 4-5 फिर आप कहाँ रहते हैं सानी वाला अच्छा मैं भी नहीं फिर कौन सा सेक्टर में अरे वो मोरा अरे मैं भी उधर रहता हूँ फिर हम लोग मिले क्यों नहीं शायद ट्रेन में मिलना नहीं अभी मैं सोच रहा था बाथरूम जाते समय आप पीछे पीछे जैसा आ रहा था हमारा शायद मिल बाथरूम में तभी तो लगा कि मैं कहीं तो आपको देखा है ये मुझे कभी नहीं क्यों अगर माँ बाप को मैं नहीं पहचानता तो अब बोलेगा दूसरा जन्म का हो सकता है चलिए अब इसमें मुझे Every season the southwest. southwest monsoon arrives in the month of June and departs in September. ऐसे की डाल दो ये आई थिंक इंटरेस्टिंग काम दिया था मैंने नेदरलैंड्स का आई थिंक आईसीसी बैच 9th they found out right from Jan till December you know how is the month name nobody knows ये पूरा रोमन किंग्स का नाम है हां सर फिर वो पहले रोमन कैलेंडर ग्रीक गॉड्स थे सर तू आदित्य से भी आगे यार आदित्य बहुत अच्छा लगता है तो उससे भी अच्छा है August month is named after Augustus and July Julius Caesar so in fact they next lecture they found out from Jan to December shall I give that assignment to you guys no and I should you read then I should start teaching your MOV not MOV na abhi kya hai Julius Caesar departs in September उतना अभी तो जुलाई में आया in the month of September one more next sentence it may arrive late say जून की जगह पर आप लिख लो जुलाई और अगस्त it may arrive late say why जुलाई और अगस्त which will influence the setting up of other seasons accordingly. You understood what is accordingly means? Which will Influence the setting up of other seasons accordingly. मतलब जैसा वो लेट होगा ये भी लेट होगा जैसा आज हमारा वरद लेट आया उसके पीछे पीछे कौन आया आदित्य नहीं आया वो तो बेचारा जल्दी आया सेटिंग अप ऑफ अदर सीजन्स अकॉर्डिंगली हम लोग जल्दी आए आदित्य तो टाइम पे है ना आदित्य
Next point. Hence, arrival and departure of the monsoon along with India located in between the tropics. India located in between the tropics. Am I going too fast? The tropics is definitely the proof dash क्या लेंगे उधर डाल दो क्वेश्चन no need to write the code again. So out of the two answers, which answer you feel your best answer? दोनों इतना चलो you can keep aside your notebook. 7:30 है ना मेरा लेक्चर खत्म. Sure ना? Relax. If you have any queries, you can ask me. Any suggestions, complaints, praises. We go to this. Next time onwards, we will be starting this topo now. Once I finish with this chapter. मुझे कोई इशू नहीं है. I can start tomorrow also. But थोड़ा सा ये नंबर थोड़ा सा रेगुलर होने दो और लेट करके तो टाइम पे आना चाहिए. सर हम बात खड़ा कर तो ले इनसे पूछ लो. Very simple. Once I start topo, now I'll be ending the topo full that 4, 5, 6 chapters. So it will take 2 or 3 lectures, then I'll finish it off. So maybe like new admissions, you are a little bit going left and right, and we will. Okay, so it was nice meeting you guys. Thank you and God bless. I'll see you in my next lectures. Sir, every Saturday is a lower. Yes, my dear.